क्लास 6 सोशल साइंस। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 10 एज ऑफ रीजनल किंगडम्स के बारे में कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं पहले इसमें मेन हेडिंग्स क्या क्या दी हुई है। तो ये है आपकी मेन हेडिंग्स। तो पहले नंबर में है हर्षवर्धन रूल्ड फ्रॉम 606 to 647 and made his capital in कन्नौज। नंबर 2 है संस्कृत स्कॉलर बाणभट्ट was poet of court of Hers। थर्ड है हर्ष was a worshipper of शिवा, शिवा की पूजा करता था। ड्यूरिंग हर्ष पीरियड नालंदा was a main center of Buddhist religion। नंबर 5 है वेन सांग was a Chinese Buddhist traveler। He came of India in he come of India in 630 AD। नंबर 6 है वेन सांग traveled to छत्तीसगढ़ too। He said that the prominent city Sirpur of southern Kausal was one of the main center of Buddhist literature at that time। नंबर 7 है वतापी द कैपिटल ऑफ चालुक्य was flourishing city। Number 8 Chalakya kings was great patron of art। Number 9 Ajanta and Ellora cave are world famous caves of this period। Number 10 है ये पल्लव kings capital was कांचीपुरम। चलिए ये आपके वो किंग है हर्ष, जो कि यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, किंग हर्षवर्धन। हियर इज एंड हियर इज द चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवल ह्वेनसांग। ये ह्वेनसांग है चाइनीज यात्री, और ये वो टेम्पल है जो राजा ने बनवाया था। ये कैलाश टेम्पल ऑफ कांची, कांची का कैलाश टेम्पल है जो बनवाया था उस राजा ने, यानी कि हर्षवर्धन ने बनवाया था ये। चलिए आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स है तो सबसे पहले है had started the art of constructing temple by cutting rocks। rocks को काट काट कर किसने बनाया था? तो महेंद्र वर्मन ने बनाया था। ये तो यहाँ पे नाम लिखेंगे आप, महेंद्र वर्मन। चलिए सेकंड में देखते हैं क्या है। was the main education center of the पल्लव्स। पल्लव्स का कौन सा था? तो कांची था बच्चों। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे? कांची, कांची। इसके बाद नंबर 3 पे देख लीजिए, ये पल्लव किंग वाज अ राइटर एंड अ ड्रामाटिस्ट। तो ये महेंद्र वर्मन ही रहेंगे यहाँ पे। चलिए नंबर 4 पे चलते हैं। ये पॉलकिसिन सेकंड डिफीटेड इन वॉर। कौन से वॉर में ये डिफीट हुए थे? ये आपको बताना है। तो ये महेंद्र वर्मन यही हुए थे। नंबर 5 देखते हैं। ये चालुक्य किंग नरसिम्हा वर्मा हैड डिफीटेड इन वॉर। तो कहाँ हुआ था ये? पलकेसिन सेकंड में ही हुआ था, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट है हाउ फॉर हैड हर्षवर्धना's एम्पायर एक्सटेंडेड। सो आंसर इज हियर हर्षवर्धना's किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू उड़ीसा। पंजाब से लेके उड़ीसा तक फैला था इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड व्हेनसांग
T Sang say about Indian society? So answer is here. The Chinese Buddhist scholar Wen Sang visit India during Her's regency. Wen Sang visited many Buddhist literature. He wrote in detail about his experiences in India. These writings gives us a lot of information about that time. When Sang stayed at for 5 years in India, and when he returned, he wrote his travel log. He says that Buddhism in India was not as popular as he had thought. Question number third है describe the religious activity of Harsa. So answer is Hars was a worshipper of Shiva. He organized Buddhist council at Kannauj. He organized the Prague, Prague assemblies held every fourth year for religious discussion and debate. At these assemblies, he gave donations to the learned, scholar, orphans, and the poor. With which countries did the Chalukyas have trade relations? Answer. Vatapi, the capital of Chalukyas, was a flourishing city. Foreign trade with Iran, Arabia, ports of the Red Sea, and Southeastern Asia flourished under the Chalukyas. Write brief note on Alvar and Nair and then second है वेन सॉन्ग तो ये अलवर एंड नायर का दिया हुआ है पहला आंसर है ये सो अलवर एंड नायर सो ड्यूरिंग दिस पीरियड a group of people in South India felt that religion was the personal worship of God like Shiva or Vishnu. These ideology come to be known by the name of Bhakti. This movement was joined by the common people in large numbers. They wandered from place to place singing hymns of Shiva and Vishnu. They preached in the local language. Tamil and the devotees of Vishnu were called Alvar and the devotees of Shiva were called Nair. Nayanar. They influenced the society of southern Indian greatly. Now, second one is the Wensang. Wensang was a Chinese Buddhist traveler. He came to India in 630 AD. He was so fond of studies that he faced several hardships for this. He crossed mountains and deserts and came to India and studied at Nalanda. Nalanda University was a center of Buddhist learning at the time of the Harsa. Harsa has granted 100 villages to the Wensang. Wensang had traveled to Chhattisgarh too. He has said that the prominent city Sirpur of the southern coastal was one of the main centers of Buddhist literature at that time. Which religion was followed by Harsa? So answer is here. Harsa was the followed of Buddhism. Second है in which university Wen Sang studied? So answer is Wen Sang studied in Nalanda University. Who was the court poet of the Harsa? So Banbhat was the court poet of Harsa. He wrote Harsa autobiography. Why was Mahabalipuram famous? So in Mahabalipuram, many rocks temples were built by the FILLUPS kings. These temples were cut out large rocks and are the temple of worldly interest.
Next, why was Kanchipuram famous? So, Kanchipuram was the capital of FILLUPS. It was the center of learning Tamil and Sanskrit. Kailash temple of Kanchipuram is very famous. What do you know about Nalanda University? Answer is here. Nalanda University was a center of Buddhist learning at the time of Harsa. Students from India and the other countries came here to study. Which country did Wen Sang come from? What did he write about India? So answer is here. Wen Sang was a Chinese Buddhist pilgrim who visited India during the region of Harsa. He has written that. क्या लिखा है देखना है बच्चों. Number A है Buddhism was popular in Eastern India at the time. B. Nalanda was a leading university in the country to which the scholars came from different countries to study. C. In India there was caste system and the untouchables were treated badly. D. There was a differences between the houses of the rich and those of the poor. इन दोनों में बहुत डिफरेंस था इनके घरों में. नंबर ई पार्ट है the dresses of the people varied in different places. नंबर एफ है the Indians were hot tempered but honest. G. There were not many criminals. H. Cruel punishment was not given. इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है. नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करेंगे आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और लाभ पहुंच सके. और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके और इसका फायदा आप लोग ले सको. मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत आभार है. और इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आप लोग ऐसा ही प्यार मुझे देते रहेंगे जिससे मैं नया वीडियो अपना बनाकर डालता रहूं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.